Namaste dear students, this is Rupesh Patak, your Sanskrit teacher. Today I am going to take grade 9 Manika book chapter number 1. So first is the introduction part, which is not that important. We are directly going on the chapter. I try to explain you both languages in the, Hindi and English both. I hope you will understand that. So we start the chapter. अविवेकः परमपादं पदम् अस्ति उज्जैन्यां माधवः नाम विप्रः। उज्जैनी में माधव नाम का एक ब्राह्मण था। इन द सिटी ऑफ उज्जैन देयर वॉज अ ब्राह्मण नेम माधव। एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। एक बार उसकी पत्नी अपने बालक पुत्र की रक्षा के लिए उस ब्राह्मण को नियुक्त करके स्नान के लिए चली गई। Once his wife went to take a bath after asking him to protect their little son. अथ ब्राह्मणः राज्ञ्याः श्राद्धार्थं निमंत्रिताः। उसके बाद वह ब्राह्मण राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए बुलाया गया। After some time, the Brahman was invited by the king of a Shraddha ceremony. ब्राह्मणः सहज दारिद्र्यात् अचिन्तयत् यत् यदि सत्वरं न गच्छामि तर्हि अन्य कश्चित् श्राद्धार्थं व्रतः भवेत्। उसके बाद वह ब्राह्मण राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए जन्म से प्राप्त गरीबी के कारण ब्राह्मण ने सोचा, यदि मैं जल्दी नहीं जाता हूँ तब दूसरा कोई श्राद्ध के लिए बुलाया जा सकता है। Because he was poor from birth, the Brahmin thought, if I do not go quickly, then someone else may be called for the Shraddha ceremony. Yatah, because आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम् अक्रियमाणस्य कालः पीबति तद्रसम्। लेन देन और करने योग्य कार्य को यदि तुरंत नहीं किया जाता है तो समय उसका रस पी लेता है, अर्थात समय उस कार्य को के आनंद को महत्व को नष्ट कर देता है। If money matter and important work are not done immediately, time destroys their value and joy. In other words, delay reduces the importance and the benefit of the work. किंतु बालस्य अत्र रक्षकः न अस्ति, ततः किं करणीयम्? परंतु यहाँ बालक की रक्षा करने वाला नहीं है। But here there is no one to protect the child. So what should I do? ततः किं करणीयम्? भवतु चिरकालपालितम् इयं पुत्र निर्विशेषं नकुलं बालरक्षायां व्यवस्थाप्य गच्छामि। अच्छा, बहुत समय से पुत्र के समान पाले हुए इस नेवले को बालक की रक्षा के लिए नियुक्त करके जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, वैसा करके चला गया। I will leave this mongoose whom I have raised like my own son for a long time to protect that child, saying that the Brahman went away. ततस्तेन नकुलेन बालसमीपम् उपसर्जन् कृष्णसर्पं दृष्ट्वा स तं व्यापाध्याय खण्डस्वाः कृतवान्। उसके बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध के लिए फिर उस नेवले ने बालक के पास जाते हुए एक काले सर्प को देखा। उसने उसको अर्थात सांप को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। The mongoose saw a black snake going near the child. It attacked the snake and killed it, tearing into the pieces. स तं व्यापाद्याय खण्डस्य कृतवान्। अत्रान्तरे ब्राह्मणो अपि श्रद्धां गृहीत्वा गृहम् उपावृताः।
इसके बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध लेकर घर वापस आ गया। The Brahman returned home after the Shraddha ceremony. ब्राह्मणं दृष्ट्वा नकुलः रक्तविलिप्तः मुखः पादः तस्य चरणयोः अलुठत। ब्राह्मण को देखकर खून से सने हुए मुख और पैर वाले नेवले उसके चरण में लेटने लगा। विप्रः तदाविधम्। After some time, the Brahman returned from the home ceremony, seeing the Brahman and the mongoose with the blood on his mouth and feet rolled near his feet happily. ब्राह्मणं दृष्ट्वा विप्रः तथाविधं तं दृष्ट्वा बालको अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात् नकुलः व्यापत्वान् अनन्तरं यावत् उपसृत्य अपत्यं पश्यति तावत् बालः सुस्थवः स्पर्शः सर्पश्चः व्यापादितः तिष्ठति। ततः तम् उपकारकं नकुलं मृतं निरीक्ष्य आत्मानं मुनिषतं मान्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम् अगच्छत। ब्राह्मण ने उसको वैसा देखकर इसने बालक को खा लिया है ऐसा समझकर क्रोध में नेवले को मार दिया। बाद में जब पास जाकर संतान को देखा तब वह बालक सही रूप में विद्यमान था और सर्प मरा हुआ पड़ा था। तब उस उपकार करने वाले नेवले को मरा हुआ देखकर अपने आप को ठगा मानता हुआ दुखी हो गया, इसीलिए कहा जाता है when the Brahman saw and he thought the mongoose had killed my child. In anger he killed the mongoose immediately. Later when he went inside and looked carefully, he saw that the child was completely safe and snake was laying dead nearby. Then seeing helpful mongoose that the Brahman felt cheated by own mistake and become very sad. Therefore it is said, सहसा विदधित न क्रियामविवेकः परमापादं पदं वर्णते हि विस्मृत्य कारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपन्नः। अचानक आवेश में बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विवेक शून्यता बड़ी आपत्तियों का कारण होती है। इसके विपरीत निश्चित ही सोच समझकर विवेकपूर्ण कार्य करने वाले के गुणों पर उपलब्ध होकर संपत्ति, धन दौलत, सुख स्वयं ही उसको चुन लेती है या उसका वर्ण करती है। One should never do any work suddenly in an anger without thinking carefully. Lack of wisdom caused great problems. On the other hand, success, wealth, and happiness naturally come to the people who act wisely and think before doing anything. So this was the chapter. In the next part, I will going to give you about the question and answer along with their English meaning also. I hope if you like this one, then please subscribe my channel and share with your friends. So thank you so much.